Now, today's topic is enzyme. हम लोग आज एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम नाम आप लोगों ने सुना होगा। Enzyme was first of all reported by Edward Buchner. However, the term enzyme have been given by Kuhn. Edward Buchner was working on yeast. He used sucrose as a preservative and observed that sucrose has been broken down and hence the chemical that is involved in breaking of sucrose has been found to be an enzyme. And later on, Kuhn coined the term enzyme and obtained urease as an extract from from plants to act as enzymes. Further, different scientists obtain different types of the enzymes from different sources. Now, these enzymes are chemically proteins. Enzymes are biocatalysts. Enzymes are biocatalysts. Catalyst मतलब होता है the agents, the chemicals which are involved in the reaction to speed up, accelerate or decelerate the speed of the reaction without taking part in the reaction, without consuming during the reaction. कैटालिस्ट समझे? ऐसा एजेंट जो किसी एंजाइम को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है, लेकिन खुद उस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, मीन्स they are not consumed during the reaction. However, their presence is required for the process, for the continuity of the reactions. There may be inorganic catalysts in your chemistry which are inorganic in nature, having differences from the enzymes, but the purpose of both inorganic as well as organic catalysts are same. However, enzyme catalyzed reactions are very fast. Enzyme catalyzed reactions are very fast in comparison to inorganic catalysts. Now, these enzymes are proteinaceous in
whenever हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था प्रोटीन का, तो दो ग्रुप में बांटे थे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस, enzymatic proteins and non-enzymatic proteins. It means enzymes are proteins. All proteins are not enzymes. There are certain exceptions. Exception है राइबोजाइम, आपको बताया था कभी, राइबोजाइम is not protein, it is nucleic acid. It is nucleic acid. It is RNA. RNA that acts as enzymes are known as ribozymes. And I have already taught you that in the case of prokaryotes, the larger subunit has 23S rRNA. In prokaryotes, larger subunits means 50S subunit of ribosome has 23S rRNA, and in eukaryotes, larger subunit having 28S rRNA. Both these units act as enzymes. Clear? So, all enzymes are proteins, but some enzymes are not proteins, such as ribosomes. Ribosomes having 23 rRNA and 28 rRNA. These two units, these two types of rRNA act as enzymes. So ribozymes are not proteins; they are nucleic acids, but they act as enzymes. Clear? So, enzymes are proteinaceous in nature, one of the very fundamental property of enzyme. Secondly, enzymes have three-dimensional structure. The proteins that act as an enzyme has three-dimensional globular structure. Globular form. Tertiary structure. I have taught you primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. So, enzymes are having tertiary structure which is globular in form, and in this form of enzyme there are specific sites for substrates to bind. Those sites are known as active sites. So enzymes have active sites. Enzymes have active sites. Active sites are the sites at which substrate bind during the catalysis, during the reaction to form the products. Enzymes are not used during the reaction. Enzymes are not consumed during the reaction. It means same molecules can be used. Same molecule can be used again and again to catalyze the reactions. Enzymes are specific to substrates. Enzymes are specific to substrates. It means there are different types of enzymes.
performing different types of reactions. So enzymes are substrate specific. Enzymes are sensitive to temperature and pH. Enzymes are sensitive to temperature and pH. Enzymes are also sensitive to specific compounds known as inhibitors. Enzymes are also sensitive to specific chemicals known as inhibitors. Different enzymes act at different pH and at different temperature. Okay, so alteration in pH or temperature affects the rate of reaction catalyzed by the enzymes. In this way, we can say that enzymes are the biocatalysts which are required to control different types of metabolic reactions which are going on in our cells. Right? Now, regarding nomenclature of enzymes, usually, traditionally, the name of enzyme has been given to be the name of the substrate on which the enzyme acts. अक्सर ऐसा होता है कि एंजाइम का जो नाम होता है वह सबस्ट्रेट पर बेस्ड होता है. यदि कोई एंजाइम उसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उस एंजाइम का नाम उसी सबस्ट्रेट पर आधारित होता है. इट इज बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट. राइट? मान लो देयर इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स सुक्रोज. कोई एंजाइम है जो सुक्रोज को ब्रेक करता है. तो यदि सुक्रोज को ब्रेक करेगा तो फ्रुक्टोज बनेगा एंड ग्लूकोज बनेगा. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो इस एंजाइम का नाम क्या दे दिए हम? सुक्रेज. सुक्रोज पर एक्ट कर रहा है सुक्रेज. लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है लैक्टेज. लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. लैक्टोज किस चीज से बना हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर आइसोमर्स. गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर आइसोमर्स. Means fructose, glucose, galactose all are isomers. Right? Similarly, we can take another compound. Let us maltose. So maltose is made up of glucose plus glucose. Maltose is made up of glucose plus glucose. Means all these are disaccharides. वो लोग शुगर पर हैं. All these are disaccharides. Hence the enzyme को क्या कहेंगे? Maltase. The name of some enzymes is also based on the source from which it was extracted. जिस सोर्स से एंजाइम मिलता है तो सोर्स के बेसिस पर भी
एंजाइम का नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस, ये तो कहा कि सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है उसके आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरी बात कर रहा हूं कि जिस सोर्स से एंजाइम मिलता है उस सोर्स की बेसिस पर भी उसका नाम रखा जाता है। मान लो फाइकस से कोई एंजाइम निकलता है तो उसका नाम रखा गया फाइसीन। यदि पपाया से, पपीता से कोई एंजाइम निकलता है, उसमें कोई एंजाइम है तो उसका नाम रखा गया पापीन। यदि पाइनएप्पल से कोई एंजाइम निकलता है तो उसका नाम रखा गया ब्रोमेलिन। So a large number of enzymes have been named according to the source from which they are obtained. तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर सबस्ट्रेट पर बेस्ड है, तो कुछ एंजाइम्स का नाम जो है वह सोर्स पर बेस्ड है। कुछ एंजाइम्स का नाम जो है वह रिएक्शंस को जो कैटालाइज करता है उस पर बेस्ड है। कुछ एंजाइम्स का नाम जो है वह ट्रेडिशनल है, जो पहले दे दिया नाम वही चल रहा है। सो देयर इज नॉट एनी uniformity regarding the nomenclature of enzyme. That is why International Commission for Enzyme Nomenclature have been established to name the enzymes which are common everywhere, like that of the biological name. बायोलॉजिकल नेम हम लोग पढ़े थे ना कि उसके लिए कॉमन रूल बनाया गया है और दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका नाम जो होगा उस रूल पर बेस्ड होगा। सिमिलरली certain rules have been framed and the enzymes are grouped, have been named according to the Commission of Enzyme Nomenclature, right? So now, according to the Commission, enzymes have been kept into 6 classes. अब हम एंजाइम्स को कितने क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है एंड दीज एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स हैं उनको 6 क्लास में बांट दिया गया है एंड ईच एंजाइम हैव बीन गिवन 4 digits न्यूमेरिकल कोड्स। हर एक एंजाइम में 4 नंबर्स होंगे। लेट अस मान लो कोई एंजाइम है, हमने उसका नाम रख दिया 2721। दिस कोड हैज बीन गिवन टू ए पर्टिकुलर एंजाइम। दिस फर्स्ट numerical indicates the class. This indicates the class. Second digit indicates subclass. Third one indicates subdivision of the enzyme. Subdivision. And the last one represents the reaction catalyzed by the enzyme. So this one represents the reaction catalyzed. There are 6 classes of enzymes. There are 6 classes. So ये 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 number of classes 6.
तो यहां जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं हो सकता। लेकिन यहां ये वैरी कर सकता है, ये 7 है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो सब क्लासेस और सब डिविजन्स और the last two all are variable, and the first, that is the class, can vary from 1 to 6, not 0, right? तो अब देखते हैं ये 6 क्लास और एंजाइम्स के हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमेरेजेज, and ligases. Right? These are the 6 classes of enzyme. Class 1 पर कौन है? ऑक्सीडोरिडक्टेज। क्लास 2 कौन है? ट्रांसफेरेज। क्लास 3 कौन है? हाइड्रोलेजेज। क्लास 4 कौन है? लाइजेज। क्लास 5 is isomeresis, and class 6 is ligases. So all the enzymes have been kept into different classes, and this classification is based on the reactions catalyzed by that enzymes. For example, let us oxidoreductase. Oxidoreductase, it means this enzyme is responsible for either oxidation or reduction. Means it is involved in transfer of electron or proton. Means either electron or hydrogen. यदि कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज। मान लो हम कहते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या हुआ? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। हाइड्रोजन जो है यानी प्रोटॉन्स जो है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो गया। सो दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे एंजाइम्स को किस क्लास में रखेंगे? ऑक्सीडोरिडक्टेज। सिमिलरली ट्रांसफेरेज, it is also involved in the transfer of groups, but other than electron and proton. ये भी ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, but it is involved in the transfer of other functional group than that of the electron or proton. समझ में आया? ये भी इसका तरह यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, यहां भी ट्रांसफर हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा किसी और ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। मान लो ट्रांसएमिनेज मींस एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर किया। ट्रांसकीटोलेज इसका मतलब कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे जो एंजाइम होंगे
ठीक है, जो ट्रांसफर में इन्वॉल्व तो है, लेकिन वह ट्रांसफर दैट इज नॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसको किस क्लास में रख देंगे? ट्रांसफेरेजेज। हाइड्रोलेजेज means the enzyme which is involved in breaking down of a compound with the help of water. यहाँ वाटर इन्वॉल्व है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इज मस्ट। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमने आपको कहा था सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स जो है ना, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है जो फूड को ब्रेक करता है, वह वाटर यूज करता है। वाटर वहां इन्वॉल्व है, तो यदि वाटर इन्वॉल्व है, वाटर के प्रेजेंस में कोई एंजाइम एक्टिव होता है, तो ऐसे एंजाइम्स को किस क्लास में रखेंगे? हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज। यदि वाटर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ब्रेक डाउन होता है, यदि वाटर इज नॉट इन्वॉल्व बट हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, hydrolysis occurs in absence of water, then the enzyme is kept under lysis. The enzyme is kept under lysis. मान लो fructose 1,6-diphosphate, फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, उसका ब्रेकडाउन होता है तो दो कंपाउंड बन जाता है। यहां वाटर इन्वॉल्व नहीं है, यहां वाटर इन्वॉल्व नहीं है, अल्डोलेज एंजाइम इन्वॉल्व है। मींस विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर दिस एंजाइम ब्रेक्स फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate to form two trioses. One is dihydroxyacetone phosphate and other is phosphoglyceraldehyde. तो एक कंपाउंड टूटा, दो कंपाउंड बना, वाटर इज नॉट इन्वॉल्व, तो इस एंजाइम को कहां रखेंगे? लाइसेस। नो आइसोमेरेजेज, आप जानते हैं नाम ही है आइसोमर्स बनाया, जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज बना दिया, फ्रुक्टोज को गैलेक्टोज बना दिया, तो आइसोमर्स बना ना। जिस एंजाइम्स के प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन होगा उसको किस क्लास में रखेंगे? आइसोमेरेजेस। जैसे मान लो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उसको बदल दे, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया, तो जो एंजाइम यहां इन्वॉल्व होगा हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेजेज। तो हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेज इज वन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। तो एक कंपाउंड अपने आइसोमर में बदल गया, तो दिस एंजाइम विल बी केप्ट इन क्लास 5, दैट इज आइसोमेरेजेज। Ligases, the enzyme that is involved in ligation, in joining of the two compounds. जो एंजाइम दो यूनिट्स को जोड़ेगा, दो कंपाउंड को जोड़ेगा, उसको कहेंगे क्या? लाइगेसेस।
जैसे मान लो डीएनए लाइगेज है, तो डीएनए को जोड़ेगा, रिपेयर करेगा। अब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। मींस ये जो है रूबिस्को, दिस इज द मोस्ट abundant protein of the world. This is the most abundant protein of the living system that acts as an enzyme to fix carbon dioxide during photosynthesis. क्या करता है ये? दो कंपाउंड को जोड़ता है। ये क्या करता है? BP के साथ CO2 को जोड़ता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है, जो बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में CO2 रिएक्शन करता है RuBP से, तो PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो दो कंपाउंड को जोड़ा ना, दो कंपाउंड को जोड़ने वाला एंजाइम हो गया रूबिस्को। तो रूबिस्को इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 6, दैट इज लाइगेजेज, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं करना है। क्लास इज फिक्स्ड, फर्स्ट क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड क्लास ट्रांसफेरेज, थर्ड क्लास हाइड्रोलेजेज, फोर्थ क्लास लाइजेज, फिफ्थ क्लास आइसोमेरेजेज, सिक्स्थ क्लास ligases. Sixth class ligases.